Hello, everyone, and welcome to the Hindu editorial analysis brought to you by Unacademy. And I am Vaishnavi, who is going to do the analysis. I welcome all of you. It's a fine Saturday afternoon, and I hope you can see as well as hear me. All right. So you can see and hear me. Good afternoon. Hello, Hewan. Hello, Meg. Hello, Vedika. Yashi, Gulu, Leela, all of you, good afternoon, a very good afternoon. Hi, Triranga, Aman, good afternoon. Christy, hello, good afternoon, Christy. Hi, Alpesh. Okay, what's up? All right, so let's get started with today's Nishita. Hello, Nishita. Hello. Rita. Ritik. Hello. How you doing? Doing absolutely great. It's Saturday. How can I not be fine? All right, so let's get started with today's editorial, everyone. As soon as I find a place to keep this. Hmm. Hello धनंजय, I'm doing great. मैं बहुत अच्छी हूँ. I hope आप भी अच्छे हो, धनंजय. Yes, Nishita, I think we all were missing you. All right, so let's get started. Let's dive in. ये है मेरा टेलीग्राम चैनल. अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब बिकॉज अ लॉट इज हैपनिंग ऑन द चैनल. ऑल माय क्लासेस शेड्यूल, कब कौन से क्लासेस कहाँ पे होते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू गेट इट ऑन द चैनल, एज वेल एज वी डू अ लॉट ऑफ quiz and fun activities on the channel, and we have discussions on the channel. So any in even when you have a doubt regarding anything in English or critical reasoning, you can ask me on the channel. So it is of vital importance that you subscribe to this channel. Unacademy underscore Vaishnavi underscore CLAT है. अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो simply type Vaishnavi Pandey 31. You will be able to find it. अब इस क्लास के नोट्स चाहिए होंगे अगर आपको, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या तो जो ब्लू स्ट्रिप में दिया हुआ है लिंक, उसको भी आप क्लिक करके आपको ले जाएगा ये आपके पीडीएफ नोट्स की तरफ. ओके, सो अलोंग विद द एनोटेशन, जितने भी एनोटेशन मैं करूंगी क्लास में, दैट विल आल्सो बी अवेलेबल अलोंग विद द नोट. नहीं, 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 ये बातें. All right. Okay, then there is the Wheel of Free English. Okay, this is a daily ritual जो 6 बजे होता है, and this is free for everyone. Anyone can join these sessions, and you can scan this QR code, and it'll take you to all the classes that have happened in this the wheel of free English. So generally on Mondays we do grammar, Tuesdays को हम vocabulary करते हैं, Wednesday to Friday we do RC, reading comprehension of the day, and Saturday, that is today, we do a mega quiz of all the editorial vocabulary that has happened for a week, or let's say a certain number of days. So I hope that you all have revised all your vocabulary, because अब आपके पास notes भी है, PDF notes भी हैं classes के. So make sure that when you come today for the 6 p.m. class, you will come prepared. Now can we get started? Yes, Nishit, आज है. Hewan has
said, let's get rolling. Just see me rolling. Hitting. Ma'am, could you please send me a recording of you singing Hell to the No, Vedika? Definitely not. I'm not going to embarrass myself like that. I just sing. I'm not a singer. I'm not definitely. This will be uh, from the NYC. Good job. All right. Oh yeah, Vedika, thank you. Still not there. Okay. As soon as I'm confident, you will be the first one to receive my recording. I promise. I was waiting for you to say dive. Let's dive in. Okay, Tridanga, I was waiting for you as well. Okay. ठीक है. There's a lag. What? It is impossible. Why is there a lag? The weather is absolutely fine. Internet connection is fine. All right, let's get started. तो आज के वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जो इशू है वो बहुत ही अच्छा प्यारा इशू नॉट प्यारा इशू कैसे प्यारा हो सकता है बट द editorial that we have picked, which editorial are we going to be doing? त्रिरंगा बताएगा त्रिरंगा बताता है सही से. Now it is fine. Okay, thank you हर्षिका. अब नहीं. ठीक है गुल्लू दिसले. Yes. Which editorial are we going to be doing today? कौन सा editorial करने वाले आज हम? Mm-mm. Mm-mm. Okay. Yes, Mehak, yes. Yes, Turanga, I know it. Yes, disparity. Yes, that's what we are going to be doing. So disparity उससे याद आता है सबसे पहला word जो हमारा है. Let's get started. Okay, let's start. Stretch your muscles and break your knuckles and get started. Okay, let's get started. Disparity का मतलब क्या होता है? Noun है. Disparity मतलब difference in level of treatment. Okay, disparity मतलब दो लोगों को या चीजों में या पीपल के ट्रीटमेंट में जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं किसी को उसमें डिफरेंस है. ओके, दैट इज डिस्पैरिटी. ओके, स्पेशली वन दैट इज सीन एज अनफेयर. ओके, और जो ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है ये स्पेशली कैसा ट्रीटमेंट को डिस्पैरिटी कहते हैं. कैसे स्पेसिफिक अनइक्वल ट्रीटमेंट को डिस्पैरिटी कहते हैं ऐसे. Again this is happening. I thought that this was over. I did this. Okay, anyway. मैम क्लैट निकल पाएगा. स्टडी विथ लव. पहले स्टडी कर लो फिर उसके बाद देखा जाएगा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा. अपना एफर्ट तो लगाओ. कैसे मैं ज्योतिष थोड़ी हूँ यहाँ पर बैठी हुई. आप कितना एफर्ट लगा रहे हो वो मुझे कैसे पता है. जितना एफर्ट लगा रहे हो उसके हिसाब से मैं बताऊंगी. जितना टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो उसके हिसाब से बताऊंगी. निकल जाएगा कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ भाई. Okay, a difference in level of treatment, especially one that is seen as unfair. ऐसा level of treatment जो unfair देखा जाता है लोगों से, that is called disparity. Okay. Then we have earnest. Okay, earnest का मतलब sincere होता है. Okay, sincere. Remember, earnest is always sincere. Okay. So resulting from or showing sincere and intense conviction. Okay, sincere मतलब दिल से आ रहा है. Okay, this is my earnest request. मतलब ये मेरे दिल से request है कि आप ये काम कर लो. ओके, सो एडजेक्टिव है अर्नेस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज अटेन्ड.
ऑफिशियल लव दोबारा क्या समझाना है? क्या? डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी इज भेदभाव। ओके, भेदभाव इज डिस्पैरिटी। ओके, अर्नेस्ट का मतलब सिंसियर, मतलब दिल से, अगर आपकी शिद्दत से। ओके, अर्नेस्ट इज शिद्दत से। ओके, वाह, हाँ, शिद्दत से। ओके, अटेन्ड। Next word is attained. Okay, this has come from the word attain. Okay, attain something. Okay, so attain से आया है attainment. Okay, attain something or attainment. Okay, this is the verb form. Okay, he attained a level of success. Okay, जिसका मतलब क्या होता है? The action or fact of achieving a goal towards which one has worked. Okay, so किसको कहते हैं attainment? अपने the action or fact of achieving a goal. Okay, ट्राइंग टू अचीव अ गोल और अचीविंग अ गोल। ओके, आप अचीव कर लिए अपना गोल। ओके, वो वाला जो एक्शन होता है उसको अटेनमेंट कहते हैं। ओके, सो आपको गोल अपना मिल गया। ओके, टुवर्ड्स विच, achieving a goal towards which one has worked. Okay, so you are finally attaining the results for which you worked so hard. Okay, you are finally attaining the results for which you worked so hard. यहाँ पर verb form में use किया गया है। And the attainment of results after you have worked really hard is glorifying. Okay, so attainment and attain. Okay, moving on to the next one, empowerment. Women empowerment आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, and सुनना जरूरी भी है। Okay, because what is empowerment? The process of gaining freedom. Okay, freedom and power। किस चीज के लिए पावर? टू डू वॉट यू वॉन्ट टू, वॉन्ट, और टू कंट्रोल वॉट हैपन्स टू यू। ओके, only to you। Okay, so women empowerment is giving women that power to control their own narratives। Okay, giving them power to control their own narratives। Okay, so anything that is being empowered, okay, दैट मीन्स उनको अपना नरेटिव कंट्रोल करने की का पूरा हक दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि यू आर हैव द फ्रीडम ऑफ कंट्रोलिंग योर ओन नरेटिव। मतलब क्या हुआ? योर ओन नरेटिव मतलब अपने डिसीजंस, अपने बारे में डिसीजंस। ओके, अर्लियर this was also not possible, right? Ki women are making decisions for themselves, that was not there. So women empowerment is empowering them to make their own decisions, to tell them that you are in control of your life। Okay, that is to empower someone। Okay, to tell them, to make them understand, or the process of giving them the freedom and the power to make decisions for themselves and to control what happens to them। Okay, next is inaugural। Okay, inaugural is an adjective, empowerment is a noun, empower karna is the verb form, right? To empower someone is the verb form। Okay, she felt pretty empowered after the author's talk show। Okay, ऑल राइट, इनॉग्रल, इनॉग्रल मतलब क्या होता है? मेकिंग द बिगनिंग। इनॉग्रेशन से आया है, इनॉग्रेशन विल बी द नाउन फॉर्म। ऑलराइट, ये हो गया हमारा नाउन फॉर्म। सो इनॉग्रल क्या हो गया? मेकिंग द बिगनिंग of an institution, activity or period of office। Okay, so inaugural का मतलब beginning of something। Okay, beginning, it can be a beginning of an institution, an activity, कोई भी चीज की शुरुआत जो होती है उसको inaugural कहते हैं। Okay, adjective है तो इसके बाद एक noun आएगा, inaugural event, inaugural institute, inaugural event for the institution। Okay, और inaugural period of time। Okay, this is an inaugural period of time, तो हमेशा इसके बाद एक noun जरूर आता है। Okay, this we have seen before, attainment, earnest, disparity भी हमने पहले देखा है। Okay, now spur is also something that we have seen before। Okay, spur का मतलब क्या होता है? It is the verb form spurred, and spur someone into action। Okay, so give an incentive or encouragement to someone। Okay, किसी को बढ़ावा देना। Okay, so spur someone into action मतलब किसी को कुछ like let's say एक छोटा भाई है आपका। ओके, आपकी बात कभी नहीं मानता है। ओके, लेट्स से आपकी बात कभी नहीं मानता है, तो आप क्या करने की कोशिश, आपको लेट्स से रिमोट चाहिए। ओके, आप लेटे हुए हो और आपको रिमोट चाहिए, आपका भाई आपके बगल में बैठा हुआ है। ओके,
and you know he's not going to give you the remote. Definitely not. Okay, so you have to provide him with some incentives. Okay, so in order to spur him into action. Okay, so you tell him कि अगर तुम मुझे remote दे दोगे तो मैं तुम्हारा एक लेवल क्रॉस करवा दूंगा सर्टेन गेम में, ठीक है? ओके, और यू विल not tell mummy about something horrible that the kid has done. Okay, so आप क्या कर रहे हो? एक तरह से धमकी भी दे रहे हो और एक तरह से इंसेंटिवाइज भी कर रहे हो. ओके, इंसेंटिवाइज कर रहे हो मतलब या तो आप बोल रहे हो कि चॉकलेट दूंगा मैं, चॉकलेट दूंगा या जो भी दूंगा. ओके, सो यू आर सेइंग कि अगर तुम मेरे लिए रिमोट ले आओगे तो मैं तुम्हें ये चीजें दूंगा. ओके, आई विल लेट यू वेयर माई शर्ट, आई विल लेट यू प्ले विथ माई what do people Legos? Okay, Legos. What do people play with these days? I'm talking about toys. Okay, anyway. So inaugural is making the beginning of an institution, activity or period of time or period of office. Spur क्या होता है? Give an incentive or encouragement to someone. Okay, so spur someone into action. We generally say spurred him into action. Him or her into action. Okay, so because of the incentive or because of the encouragement that you have provided, कोई तुरंत action में आ जाता है. Okay, uptick is also something that we have done before. Uptick का मतलब a small increase or a slight upward trend. Okay, so spike आता है graph में, एक graph में जो let's say it is going this way but there's a small uptick in the graph. Okay, and this uptick is called, this is called uptick. Okay, so small uptick in a graph. Okay, in a trend. Okay, so small uptick in a trend. Okay, so thoda sa increase hota hai, that is called an uptick. Parity, disparity or parity, you already know the meaning of disparity. So parity should not be difficult, the state or condition of being equal. Okay, parity, disparity, unequal. Okay, and parity, equal, especially as regards to the status or pay. Okay, so status or pay में equal, saman, सामान्य हो जाते हैं. That is parity. Imperative is an adjective. Imperative is an adjective जिसका मतलब होता है vital important, something that is crucial. Okay, imperative मतलब बहुत जरूरी है ये चीज. Okay, ये एक condition है जो fulfill होना ही चाहिए. It is imperative, it is crucial. Okay, all right, so the words are disparity, earnest, attainment, empowerment, inaugural, spur, uptick, parity, and imperative. All right, so let's look at the sentences. Pull up your socks. Oh, nice one. रंगा क्या कहा आपने? बोरिंग वाला. दूसरा वाला बहुत इंटरेस्टिंग है. Okay, all right. So, Gullu the Slayer, we are still seeing a disparity between the rates of pay for rate of pay between men and women. Okay, between men and women. Okay, then here one, fasten your seat belts, cause we're gonna step on the gas pedal. Very nice, very nice. Here one. All right. Aditya, in India, we have noticed disparity between men and women. Very nice, Aditya. Yesterday's gender disparity RC was a tragedy for me. Alpesh. You still are not out of shock. Hmm, okay. बट इट वॉजेंट एंड जेंडर डिस्पैरिटी इशू. अगर आप देखो अल्पेश, कल वाला जो टॉपिक था वो स्टार्ट हुआ था जेंडर डिस्पैरिटी से. ओके, इट स्टार्टेड विद एन इशू ऑफ हाउ विमेन के लिए जॉब विल बी लेस, बट एट द एंड इट वाज अबाउट लाइफ. ओके, क्वांटिफाइंग लाइफ. ओके, दैट्स व्हाट इट वाज. ओके, कितना प्राइस लगा सकते हैं ऑन अ पर्सन्स लाइफ. ओके, दैट वाज इट, the main aim. Okay, but still, you're still in shock.
We are still seeing, and Triranga, let me tell you, I was a little disheartened when you said boring wala. एक छोटा सा टुकड़ा हुआ मेरे दिल में. All right, we are still seeing a disparity between the rate of pay for men and women, but this time men are ignored. Oh, आपके साथ गलत हो रहा है. अच्छा. Official love, ma'am. Okay, ये पढ़ लिया. Ashrita, the teacher should not show disparity among students. Absolutely correct, Ashrita. Good job. Insert. अच्छा. Yashi, my class teacher is doing disparity, is showing disparity between me and other students. Yashi, good job. Uh, मेरी गर्लफ्रेंड बोली थी कि आप अपना चैनल का नाम स्टडी विथ लव रखिए, सो रखा है. बहुत अच्छा, बहुत क्या एडवाइस दिया. पढ़ने के लिए बोला कि नहीं आपकी गर्लफ्रेंड ने? निशिता, निशिता, hey, please don't say I'm doing disparity. I'm showing disparity or displaying disparity. Okay, alliteration हो जाएगा. Displaying disparity. And what do you mean that उसने मुझे 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए, इसलिए विधायक चाचा की बात भी की भी बात नहीं मानी. Very nice, Nishita. Good job. What do you mean I'm showing disparity? What do you mean? Have disparity. यहाँ तक तो ठीक था, but my younger sister and I, उसके बाद सही नहीं है सेंटेंस. अमन. Vedika, the difference in gender seems to be one of the biggest disparities in the world. Very nice, very nice. Earnest मतलब शिद्दत के साथ. Okay, Aman. We are showing disparity to the militants who bombed our camps. Very nice, Sivan. Good job. Gulu the Slayer, life is real. Life is earnest. Wow. Okay, Ayush, they are having a very earnest discussion. Very nice. Good job, Yashi. I am earnest for my CLAT preparation. Very nice, Yashi. Good job. Leela, to achieve something. Okay, Aditya, I earnestly asked my boss to grant me 3 days leave. Very nice. You changed it to earnestly. Earnestly, कौन सा form हो गया? Adverb. Okay, earnestly adverb form हो गया. Very nice, Aditya. Good job. Oh, thank you, Study with Love. लेकिन आपने पढ़ना शुरू किया कि नहीं ये बताओ. Okay, Truranga, when I looked over, she was in earnest conversation with my father. Then I thought, मामला settle है. Okay, very nice, Truranga. Good job. With your earnest teaching. If you want, then also I find this is impossible task for you because शक्ल के साथ अकल भी need होती है. The last part is okay, but what is the message here? I fail to understand. निशिता, एक बार फिर से उसको rephrase करोगे तो मजा आ जाएगा. Christy, there is disparity between gender, but it is my earnest request from people, stop it because everyone is equal and give chance to everyone for attainment of their work. Okay, for attainment of their hard work. Very nice, Christy. Good job. I am earnest towards my preparation for entrance exam. Very nice. Vedika, Ashrita, he earnestly shows his love, but she doesn't care about that. Very nice. Palak, Gautam Buddha attained liberation from this filthy world after meditating for 1,000 years by empowering his desires. Empowering his desires or quenching his desires? Palak, the last thing I am not really sure. Okay, Palak, good job. Everything was brilliant, just the last bit. Hiwan, I'm earnest towards
My profession as a lawyer. Very nice, very nice, very nice. I believe in the empowerment of women. Very nice, Gullu the Slayer. Good job. May, maybe I will never get empowered to plan for. क्रिस्टी आपकी तो दिक्कत ही अलग है. Maybe I will never have the empowerment to go on a trip, uh, to make my own decisions. Maybe I will never have empowerment to make my own decision, and hence I will never be able to go to Goa. Okay, but you will, Christy. शिद्दत से आप earnestly चाह रहे हो इस चीज को, it will happen. Okay, don't you worry. Aditya, after lots of hard work and dedication, I attained silver medal in the badminton tournament. Very nice, Aditya. Good job. He was very earnest towards his work. Now it's time to let him have his attainment. Very nice, Alpesh. Good job. Good job. Triranga, hey boss, bonus. Bonus payment encourages the attainment of higher production targets. Hope you understand, kiddo. अगर आप ऐसे अपनी बॉस से बात करोगे त्रिरंगा तो आप फिर वो कंपनी में कभी नहीं दिखोगे वापस. बट ठीक है, अच्छा सेंटेंस है. महक, एज द फ्यूचर जनरेशन we should be earnest towards our country. Very nice, Mehak. Good job. I want to attain my dream, NLU. Ashrita, good job. Vedika, women empowerment is being applied to the fullest now, hopefully. Very nice, Vedika. Good job, Yashi. Vaishnavi ma'am always increased the women empowerment. Vaishnavi ma'am always promoted, or Vaishnavi ma'am is a proponent of women empowerment. Okay, good job. Um, Good job, Yashi. What is shocking news, my ex, that you have attained a girlfriend. Oh, I am very happy for you, but I think one day she will also get some brain. और और मैं तो हूँ ही. Nishita, it actually feels like if you talk so much about your boyfriend, it actually feels like not your current, your ex-boyfriend, that it feels like you actually care for him even now. Otherwise, it shouldn't bother you what he's doing. All right. Sonu, our honorable PM inaugural the import from US. Our honorable PM inaugurated the import from US. Okay, in import of something from US. Very nice, Sonu. Aman, I had done someone earnest love. I loved someone earnestly, but he could not understand my feelings. Very nice, Aman. So you can just say it. I had loved someone earnestly, but he did not understand my feelings. Very nice, Aman. Good job. My mom is spurring me to clear my CLAT. Very nice, Aditya. Christy, in India, inaugural of self depends after COVID with help us a lot. What? In India, inauguration of self-dependency after COVID has helped a lot. Okay. Christy, good job. Ashrita, there are several motivation speech on women empowerment to encourage women. Very nice. Gulu the Slayer, inaugural speech of Mr. Narendra Modi at Washington was great. Very nice. Gulu the Slayer, मैं मर कर ले लूंगी रिमोट, लेकिन बाद में बाद में मम्मी मुझे मारेगी, मैं मार कर ले लूंगी रिमोट. Yes. Christy, that's the method that we generally go by, but not a good carrot and the stick method. So you should prefer the carrot, not the stick. Ashrita, there are several motivational speech on women empowerment to encourage women. Very nice, awesome. Gullu the Slayer inaugural speech of Mr. Narendra Modi at Washington was great. Very nice. I spurred my men to ambush the hostiles who are hiding behind the building. Very nice one. Good job. Palak, women's disparity has plummeted in the new era as compared to 50 years ago. Now, women are imperative in the working sector. Very nice, Palak. Good job. We are still not imperative, but good sentence. Okay. I always spur my brother to get my work done. Very nice. Legos, Hot Wheels. Okay.
Hot Wheels, oh my God, I had such a great collection. My brother had such a great collection, obviously, because who will give me Hot Wheels, right? So, what a great collection he had. He had, oh my God, awesome Hot Wheels. I used to love those cars. Heavy and what awesomeness. And we used to sit on the bed, play. He was always the driver. So we used to play like something like Tokyo Drift or something. Where I have my car and he has his car. Anyway, not something that is important. Uh, Nishita, if you want to have empowerment, then you need to get signature of Vidhayak Chachaji. What did you mean? पुलिस उसने मिलने नहीं दे रही क्योंकि उन पर मुकदमा चल रहा है. Okay, so Vidhayak Chacha is also not going to be helpful. Christy, my mother spurred me to tell truth. That is, John is my boyfriend. Spurred me, okay? My mother spurred me, okay? Spurred. John Cena, John Snow. Which John are we talking about? Always, Hulk looked at Thor for permission to spur him to beat out the big monster in Ragnarok. Very nice, Alpesh. Awesome sentence. Teachers should spur the students rather than discouraging them in their crucial days. Very nice, Mehak. Good job. This year there has been a mild uptick in annual in inflation. Very nice, Nishita. If you want to spur that, I will not tell बहुत सारे आपने स्पर से सबने बहुत सारे sentences बना लिए. I'm not, oh my God, if I start reading it, I have to read a lot. There's a lag. Moving on to the next four words. The next four words is a vicious cycle, okay? In Delhi metro and buses, there is a disparity between women and men as I pay for ticket and even don't even get a seat. आप बताओ disparity नहीं है. Women don't pay, they are given seat. Ritik, of course, but if you compare that with the history of women, okay, how women have been treated throughout history, it has been the dominance of men. And if you're still worried about getting a seat, remember there was a time when women were burnt alive because either their husband died or because they were accused of being witches. So from there, then came the era where women were just confined to houses, just houses. You don't have to have dreams. You just have to have children. From there, we have come here, and you're still complaining about bus seats. Of course, it is disparity, but sometime there has to be one time in the entire time that women get to have a say because we also have a mind of our own, right? So if that is bothering you, Ritik, you should understand the history where we are coming from. It is not just these small little things that are unfair. Okay, you're talking about things being unfair, but it is not these small little things that are actually unfair. It's the big things that have happened with women throughout history that has been unfair. People have been unfair to us. Okay, so bus is just a small problem. I think you should be and in bus, in metro, I have sat and
I have given seats to men because they had a child with them, and there's nothing wrong with standing up. I don't think so. This should not be a problem because बस की जर्नी कितनी देर की होती है? मैक्सिमम 2 hours की जर्नी आप ट्रेवल करते होगे. And I don't think that much time is for anyone other than pregnant and old people. It is not, or someone who has serious injuries. It is not some time that you cannot stand for. Okay, so it should not be a problem. Yes, so the vicious cycle, we were talking about the vicious cycle, a chain of events in which the response to one difficulty creates a new problem that aggravates the original difficulty. Okay, so basically a vicious cycle is कि कोई भी ऐसा एक साइकिल जिसकी वजह से एक चीज खराब हो रही है, तो इस चीज के खराब होने से दूसरी चीज खराब हो रही है. ओके, और इसके खराब होने से लेट्स से देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, तीसरी चीज खराब हो रही है जो फाइनली फर्स्ट चीज को और खराब कर रही है. ओके, सो दिस इज अ विशियस साइकिल. ओके, अ चेन ऑफ इवेंट्स which the response to one difficulty creates a new problem that aggravates the original difficulty. Okay, okay. No, I don't want you to treat women like goddesses or something. We are not goddesses or queens. I just want, we, what is feminism is basically wanting equal rights because cerebrally, अगर दिमाग से देखा जाए तो men and women are same in when it comes to working and being productive. Our work is never given credit for, but men when they are working, oh, कितना मेहनत करते हैं men. It is always like that. Okay, so that only in that sense, not physically कि हम भी उतने ही powerful है, body बना लेंगे तो तुमको पीछे छोड़ देंगे. That is not feminism. Feminism is basically अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक one happens to be a man and one happens to be a woman, both should be paid equally. Okay, not on the basis of their gender. All right. So vicious cycle is a chain of events in which the response to one difficulty creates a new problem that aggravates the original difficulty. Okay. So it goes on and on and on. This, it's like वो जो snake वाला game खेला होगा आपने. As soon as the snake touches its own tail, it dies, right? So that is the vicious cycle. Okay, the vicious cycle. Okay, so कोई चीज खराब होती है जिसकी वजह से कुछ और खराब होता है और फाइनली उसकी वजह से और जो पहली वाली चीज है वो और खराब होते जाती है. Okay, so it is something that goes on and on and on. Fragility, fragile से आया है, fragile. Okay, fragile से आया है the quality of being easily broken or damaged. Okay, fragility is the quality of being easily broken or damaged. Okay, so fragility एक किसी चीज की quality होती है कि ये बहुत ही नाजुक है. Okay, that is the quality, नाजुक कली है. Okay, so fragility of something is the डेलिकेट क्वालिटी ऑफ समथिंग, या इजीली ब्रोकन वाला, या इजीली जल्दी ही तुरंत ही स्पॉइल हो जाता है या डैमेज हो जाता है, वैसी चीज को, नाजुक चीज को कहते हैं फ्रेजाइल. ओके, दिस थिंग इज फ्रेजाइल एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ समथिंग इज दिस. All right, moving on to impede. Impede करना मतलब delay करना या prevent करना something from obstructing them or hinder. Okay, so impede is to delay or prevent someone or something. Okay, like politics is a vicious cycle. Okay, yes, absolutely. My heart is fragility. That's, अब मैंने किसी से दिल लगाना ही छोड़ दिया है. My heart is fragile. Okay, fragile. Okay, my heart is fragile. This is also the noun form. Okay, uh, my heart is fragile. Okay, impede करना मतलब डिले करना या कोई किसी चीज को रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना. ओके, impeded. ओके, सो किसी चीज में किसी चीज में रोकना, किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधा डालना या हिंडर करना. ओके,
And finally we have stalled. देखो stall एक if you set up a booth is also called a stall. Okay, कि मैं यहाँ पर एक stall setup कर रहा हूँ. Okay, हमारा workshop का ये वाला stall है. Okay, that is also stall, that is noun. This stall is to किसी चीज का प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करना. ओके, सो शी स्टॉल्ड द मीटिंग फॉर सम टाइम. ओके, मतलब वो मीटिंग का प्रोग्रेस रोकने की कोशिश की फॉर सम टाइम. ओके, सो स्टॉल का पास्ट फॉर्म ईडी आ जाता है, स्टॉल्ड. My heart is beating. Let's stay like this forever. A year ago, I was in a fragility mode, but now I stall that Sanjana there, and here I am with a strong kind of gentle heart. I stall that. I stalled that Sanjana there, and here I am with a strong, kind, and gentle heart. I didn't understand this, Sanjana. Batman had no torch, but darkness did not impede his progress. Awesome, Gullu the Slayer. भाई वो Prince of Darkness है ना? हाँ. Palak, I stalled my studies for 2 days and now I have a lot of backlogs left. Very nice, Palak. Absolutely correct usage of stalled. Triranga, I had no torch, but darkness did not impede my progress. Mark my words with yellow highlighter. Okay. Okay, Triranga. So Batman and then Triranga. इन दोनों को डार्कनेस से डर नहीं लगता है. Okay. Nothing will impede their progress. Boys think the girls boys think that girls are uh, fragile, but it's not a fact. It is not a fact. Absolutely not. He impedes to reply my proposals, so now I stall to talk to him. He impeded to reply to my proposal, so now I stalled to talk to him. Very nice, Christy. Good job. When we get into law college, we will be hard to impede or stall as our English skills will be up to the mark. Thanks to Vaishnavi ma'am and of course our hard work too. Of course, Alpesh, of course. I'm so glad. I really want you to show off your English skills. I really hope that happens. Whatever you said, Alpesh, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर. I really hope that happens. Fingers crossed. My sentence is real. I am that torch. बस करो. Okay, moving on to the important announcements of today. Okay. ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड है is happening on July 2nd at 2 p.m. And here you have an opportunity of winning a scholarship worth 1.25 crores. So you can scan this QR code to enroll yourself today. अब ऑल इंडिया क्लैट की मॉक टेस्ट जिसमें पैक ऑफ 35 है मॉक्स, जिसमें 30 फुल लेंथ क्लैट मॉक होंगे और 5 फुल लेंथ ए लिट के मॉक टेस्ट होंगे. एंड दिस इज exclusively available on Unacademy store at a price of 4,200 only. And this pack of 35 is free for all Plus and Iconic subscribers. Okay, so if you're not a subscriber, this is the price that you have to pay if you're a subscriber. आपके लिए free है. CLAT Assure is an assurity from our side that till you clear CLAT, हम आपके साथ हैं. The terms and conditions की हम आपके साथ कैसे रहेंगे उसके ये हैं. Submit admit card before CLAT 2024. Does it sound like I'm speaking fast? Like you have put into 1x? Can I show you? Okay. Minimum 300 hours of watch time on Plus courses. Should have attended at least 10 live tests. Applicable on Plus 12 months and above and all Iconic subscription purchases. Free extension granted will be of 1 year plus subscription. Laga na? Laga na?
Anyway, so you understand the terms and conditions, I hope. CLAT ke printed mock test is available where you have 10 sectional mocks and 10 full length mocks based on the new pattern, and this will be delivered right at your doorstep. Is ये ऑफर किसके किसके साथ अवेलेबल है? ऑल आइकॉनिक एंड 12 मंथ्स एंड अबव प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ अवेलेबल है. ओके, एंड इसकी डिलीवरी जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी. All right, moving on to June का calendar ये है. Plus, please make sure plus batches you are giving all the sectional tests. Level up for CLAT is a foundational batch for CLAT, ALET, SLAT, LSAT, MHCT 2024. I'm taking English language in this class, so you can use my code Vaishnavi10 to, अगर आप अभी भी नहीं 2024 में आपको एग्जाम देना और अभी तक आपने नहीं शुरुआत की है प्रेपरेशन का, तो अभी भी टाइम है इस बैच में. You can enroll yourself or you can enroll yourself in another batch that I will be talking about. Mission Batch 2025 is an integrated batch for CLAT and boards. Again, you can use my code Vaishnavi10 to enroll in this batch. ACE Legal is a beginner's batch for CLAT 2025. You can use my code Vaishnavi10 to enroll yourself in this batch. And there's Warriors batch also available. I think I missed that. Warriors batch is also open for CLAT 2024. All right, so can we get started with the editorial? No, Eminem vibes तो Eminem से ही आ सकती है. Let's dive in, everyone. Can we get started with the editorial? I think most of it you will be able to understand it on your own today, and tones be up, you will be able to tell me clearly, okay? So Hivan says, let's dive in. Yes, she says, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Yes, the real Slim Shady. Um, let's commence. Vedika, thank you. Harshika, is that a green light? Okay, that's a green light, I think. Okay, yes, green light. Let's... Okay, bridging the gap. Drum rolls. Bridging the gap. Let's get started. Efforts to reduce gender disparity must continue in earnest. Okay, so the author is talking about, यहाँ पर author किस बारे में बात कर रहा है कि जो ये effort है to reduce gender disparity, gender के बीच में जो disparity है, वो reduce करने के लिए एक earnest, okay, शिद्दत से काम करना जरूरी है, continue करना जरूरी है. Okay, this is what the main this is what the conclusion is. Okay, and let's get started with the say my name, Heisenberg. No, it's the confidence in it. Heisenberg, you goddamn right. Okay, India has climbed 8 places from the last year in the annual Gender Gap Report 2023 and is now ranked 127 out of 146 countries in terms of gender parity. Okay, so the author is starting with a good news. Okay, this author is starting with a good news कि इंडिया कितने places, 8 places ऊपर आ गया है जेंडर डिस्पैरिटी में. एक 146 कंट्रीज में 127 रैंक आ गया है इसका. हुर्रा. ओके, सो दैट इज व्हाट द ऑथर स्टार्ट्स विद. ओके, कि दिस इज समथिंग दैट इज गुड. ओके, नाउ सो this becomes the main idea. Okay, but this improved statistics, closing 64.3% of the overall gender gap, is hardly a cause for cheer. Okay, so ये जो improved statistics है, okay, ये जो improved statistics है, पहले तो author बोला वाह ये देखो एक good news है. Okay, and then लेकिन बोलता है कि लेकिन ये जो good news है ये कोई मजे वाला गुड न्यूज नहीं है, चीयर करने वाला, हुर्रे बोलने वाला गुड न्यूज नहीं है. ओके, सो व्हाई इज इट नॉट? बिकॉज
ये जो इम्प्रूव स्टेटिस्टिक्स है, क्लोजिंग एट 64.3% ऑफ द ओवरऑल जेंडर गैप. 64.3% ऑफ द ओवरऑल जेंडर गैप इज हार्डली अ कॉज फॉर चीयर. ओके, तो जितना जेंडर गैप है उसका 64.3% अभी भी जेंडर गैप है. Okay, and it has closed only 64.3% gender gap. So it is not something that is a cause for cheer. Okay, the author says. One on the four key marker of the index: economic participation and opportunity, education attainment, health and survival, political empowerment. In India has a window of opportunity to improve in each, so that one half of the most populous country in the world may contribute to the economic growth and overall well-being of society. तो बेसिकली क्यों नहीं ये चीयर करने वाली बात है, ऑथर ये बता रहा है कि चार मार्कर्स हैं उसमें. ओके, चार मार्कर्स कौन कौन से हैं? You have economic participation and opportunity, education attainment, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. ये चारों मार्कर्स में इंडिया को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है. ओके, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सब में है इंप्रूवमेंट की. ओके, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब सब में इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है. ओके, सब में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है इंप्रूवमेंट की, और ताकि इंडिया जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ओके, ये कंट्रीब्यूट कर सके किस चीज के लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके. इसके लिए इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है. कौन कौन सी चीजों में? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. ये सारे चीजों में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है. ओके, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज. ओके, सो टिल हियर बिकम्स द एक्चुअल मुद्दा, ओके, दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. ओके, यहाँ तक एक्चुअल मुद्दा. अब इसी को इलैबोरेट करेगा ऑथर कि क्या क्या करने की जरूरत है और क्या सिचुएशन है. गुरु गो, आज लाइट नहीं है और बैटरी खत्म होने वाली है. ओके अल्पेश, बाय बाय, सी यू एट क्विज. India has fared well in education and in political empowerment, with representation of women of over 40% in local grievances, thanks to the effort on the ground after the 73rd and 74th amendment. तो इंडिया का एजुकेशन सेक्टर में अब ऑथर बात कर रहा है. ओके, एक एक सेक्टर को लेके बात करेगा अब ऑथर कि एजुकेशन सेक्टर में एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, जिसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन 40% इन लोकल गवर्नेंस में हो गया है. ये किस चीज का एफर्ट है? ओके, ये एफर्ट है 73rd और 74th अमेंडमेंट का. ओके, तो इसमें एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया हैज फेयर्ड वेल. ओके, सो मतलब इनका इसमें तो डिसेंट स्कोर है. ओके, बट as the report points out, women represent only 15.1% of the parliamentarians. Okay, so parliamentarians में women कितने हैं? 15.1% of the entire parliamentarian are only women. Okay, the highest for इंडिया सिंस द इनॉग्रल ऑफ 2006 एडिशन. और ये हाईएस्ट है जब से 2006 एडिशन का इनॉग्रेशन हुआ है, उस टाइम से अभी तक हाईएस्ट है. 15.1% पार्लियामेंट में विमेन का रिप्रेजेंटेशन. दिस शुड स्पर पार्लियामेंट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल बाय एक्टिंग ऑन द लॉन्ग पेंडिंग विमेन रिजर्वेशन बिल. तो अब ये वाला जो अपॉर्चुनिटी है, पहले ऑथर ने बताया कि कहाँ स्कोप है इंप्रूवमेंट का, और यहाँ पर स्कोप है इंप्रूवमेंट का पार्लियामेंट में, राइट. अब ऑथर क्या बोल रहा है कि ये वाला जो फिगर है, ये जो डेटा है, इससे पार्लियामेंट को क्या मिलना चाहिए? एक पुश मिलना चाहिए, एक नज मिलना चाहिए, ताकि वो एक्शन ले ये जो लॉन्ग पेंडिंग विमेन रिजर्वेशन बिल है उसके ऊपर. ओके, जिसमें क्या प्रपोज किया जाता है? विच प्रपोजेस टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज फॉर विमेन. तो ये क्या बोलता है कि 33% ऑफ द सीट लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में विमेन के लिए रिजर्व करना चाहिए. ओके, एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 1996. ये 1996 में इंट्रोड्यूस किया था और अभी तक ये बिल पेंडिंग है. ओके, टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स स्टैंड ऑन विमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, कंसिडर दिस. Nagaland, which became a state in 1963, elected its first women MLAs only in 2023. You need to understand this point. Okay, ये खुद से समझोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको समझने में.
क्या बोल रहा है कि अगर हम देखें, ओके, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में विमेन का पोजीशन, ये समझने के लिए अगर हमें एक एग्जाम्पल देखना है, तो एग्जाम्पल दिया गया है कि विमेन का पार्टिसिपेशन नागालैंड में, ओके, पॉलिटिक्स में कब दिया गया था इनको? 1963 में स्टेट में पास कर दिया गया था कि विमेन कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन असेंबली, ओके, इलेक्शंस। और फाइनली विमेन एमएलए कब आई? 2023 में आए। विमेन एमएलए 2023 में आई। 1963 से परमिशन था, आई 2023 में। ओके, दिस इज द एग्जांपल दैट द ऑथर इज गिविंग। ओके, ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, आप बोल रहा है ऑन प्रोवाइडिंग इवन एक्सेस फॉर मेन एंड women ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इंडिया रैंक्स नियर द बॉटम विथ लेस देन 40% पैरिटी। ओके, तो क्या बोल रहा है कि अगर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की भी बात की जाए और अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, ओके, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, तो इंडिया ऑलमोस्ट नीचे पोजीशन पे है, जिसमें बस 40% इक्वालिटी है इन पे। ओके, बस 40% ऐसे जॉब्स हैं जिसमें इक्वालिटी है ऑफ पे बिटवीन मेन एंड वुमेन। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे साइड, देयर इज एन अपटिक इन पैरिटी इन वेजेस एंड इनकम, बट देन shares of women in senior positions and technical roles have dropped. Okay, तो लेकिन दूसरे साइड अगर हम देखा जाए तो एक अच्छी बात भी है। ऑन द अदर हैंड, द ऑथर इज सेइंग कि देयर इज स्लाइट इंक्रीज और थोड़ा इक्वल वेजेस मिलने लगा है और इनकम मिलने लगा है women को, लेकिन फिर भी women in senior position और technical roles में अभी भी उनका ड्रॉप देखा जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। ओके, अनदर कंसर्न इन, और दूसरा कंसर्न, अब ऑथर दूसरे कंसर्न के बारे में बात करने वाला है। अनदर कंसर्न, another concern India's is India's performance in health and survival. Okay, तो एक कंसर्न हो गया ये वाला, कि तो किस किस सेंस में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ऑथर ने बोल दिया, और इसमें इन दोनों में कंसर्न है। बाकी ये दोनों तो फिर भी ठीक चल रहा है। ऑथर बोल रहा है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी और एजुकेशनल, सॉरी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में और ये एजुकेशन अटेनमेंट में ऑथर ने बोला है कि पैरिटी है। ओके, लेकिन किसमें पैरिटी नहीं है? एजुकेशन अटेनमेंट में पैरिटी है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी थोड़ा सा देखा गया है कि थोड़ा सा सिचुएशन इन दोनों में ऑथर बोल रहा है थोड़ा सा ठीक है। ओके, इट इज, द ऑथर इज सेइंग कि ये दोनों में रिपोर्ट्स, दे हैव फेयर्ड वेल। ओके, दे हैव फेयर्ड वेल, बट बाकी सब चीजों के बारे में बता रहा है कि इश्यू क्या है। ओके, सो नाउ द ऑथर इज गोइंग टू द हेल्थ एंड सर्वाइवल। ओके, though an improvement in sex ratio at the birth has driven up parity after more than a decade of slow progress. Okay, 10 साल का slow progress के बाद अब जाके देखा जा रहा है कि sex ratio में at birth there is some sort of parity, अब equalness आई है। Okay, it is imperative that girls get access to education, though school and through school and colleges, and they also need paid work. Okay, तो अब ऑथर क्या बोल रहा है कि 10 साल का स्लो प्रोग्रेस के बाद अब जाके थोड़ा सा सेक्स रेशियो में पैरिटी आई है, इक्वलनेस आया है, राइट? अब ऑथर क्या बोल रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि गर्ल्स को एजुकेशन उनका देखा जाए, स्कूल और कॉलेज तक का एजुकेशन देखा जाए, एंड दे शुड, और उनको पेड वर्क भी मिलना चाहिए एजुकेशन के बाद। Women end up doing so much unpaid work at home that many do not have the time or the energy to opt for paid work. तो आधा से ज्यादा टाइम तो इनका घर गृहस्थी चलाने में ही चला जाता है, तो उनको घर का ही काम इतना ज्यादा करना पड़ता है कि उनके पास टाइम ही नहीं मिलता, या उनके पास एनर्जी ही नहीं बचती है बाहर का काम के लिए। दे कैन ऑप्ट। ओके, सो मोस्ट ऑफ द वर्क दैट women do at home is unpaid labor, right? It is completely unpaid labor, free फोकट का आपको लेबर मिल रहा है। दैट इज what happens, and they are too exhausted to finally seek other jobs. Okay, energy ही नहीं बचती है to seek other jobs so that they can work outside the realms of the house as well. Okay, providing girls with a job, so इस पे ये प्रॉब्लम का solution क्या है ऑथर के हिसाब से? Providing girls with job assured education will automatically improve all development indices, including nutrition, and break the vicious cycle of early marriage leading to poor maternal and child health. Okay,
तो ऑथर इसका क्या सोल्यूशन बता रहा है, इस वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा है कि ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड करने चाहिए गर्ल्स को, दैट इज जॉब अश्योर्ड, मतलब ये एजुकेशन कंप्लीट करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगा, उसके वजह से क्लियरली इंप्रूवमेंट दिखेगा नंबर में। ओके, और उसके वजह से ये विशियस साइकिल भी बंद हो जाएगा ऑफ अर्ली मैरिज, तो उसके वजह से बच्चे भी पुअर हेल्थ कंडीशन में होंगे, माँ भी पुअर हेल्थ कंडीशन में होगी, अगेन दैट साइकिल कंटिन्यूज, अगेन अर्ली मैरिज, अगेन पुअर हेल्थ कंडीशंस। सो ये वाला साइकिल ब्रेक हो पाएगा, ओके, इफ दैट हैपेंस। Finally, the author is giving a conclusion. If pandemic revealed the fragility of life, it was harder on women, with their labor participation rates dropping, thus reducing household incomes. Often, even if they get a job, women are impeded by patriarchal and cultural norms. Beside, oh God, I did not take patriarchal, but I will talk about it. Besides, they often have to worry about their safety. Okay, सो अब देखो ऑथर क्या बोल रहा है फाइनली, बहुत बहुत अच्छी बात कही है ऑथर ने, कि पैंडेमिक ने अगर कोई चीज रिवील की है कि कितना, तो ये रिवील की है कि लाइफ कितना नाजुक चीज है, लाइफ कितनी नाजुक चीज है, और ये ज्यादा मुश्किल है किसके लिए, विमेन के लिए, कि वो पार्टिसिपेट कर पाए लेबर मार्केट में ड्यूरिंग द पैंडेमिक। क्योंकि उनके लिए ज्यादा दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम completely dedicated their time to हाउस होल्ड वर्क। ओके, दे वर नॉट एबल टू गो आउट, उनको या तो घर के काम ही इतने ज्यादा हो गए, तो इनकम नहीं आने लगी घर में, जिसकी वजह से और पॉवर्टी आने लगी। ओके, सो ऑफन ये क्या होता है कि इवन इफ दे गेट अ जॉब, और ऐसा होता है कि उनको जॉब मिल भी जाता है, तो पेट्रियार्कल एंड कल्चरल नॉर्म्स की वजह से उनको वो पीछे रह जाती हैं। कि पेट्रियार्कल नॉर्म्स, पेट्रियार्कल क्या होती है, व्हाट इज पेट्रियार्कल, कैन एनीवन टेल मी? क्वेश्चन बैंक कौन सा लें? लेफ्टिनेंट अमन कुमार। Yes, male dominating society, male dominance, as in all the powers of decision making, is vested in the hand of the male of the family. Okay, the leader of the family is generally a male. Okay, and all his belongings and all his assets passes on to the next male heir of the family. Okay, so that is a patriarchal society. Matriarchal society, women are the head of the family. Matriarchal, women are the head of the family. Patriarchal, men are the head of the family or of the society or the thing. Okay, अब तो ये क्या बोल रहा है कि उसके वजह से और कल्चरल नॉर्म्स की वजह से अगेन दे लैग बिहाइंड। ओके, और ये सब चीज तो बाकी कंसर्न्स है, उसके बाद दे आल्सो हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन सेफ्टी। ओके, मेन आर नॉट डूइंग इट, मेन आर द वन हु आर, जिसकी वजह से women have to be, men are the ones who जिससे women को protect करना है। Okay, so they have to think, constantly think about their own safety as well. Okay, and well-being. So all these problems are there. The pandemic may have stalled progress to achieve gender equality by 2030, but work towards bridging the gap must go on in earnest. Okay, लेकिन ये पैंडेमिक की वजह से स्लो डाउन जरूर हुआ होगा प्रोग्रेस, लेकिन वर्क इस तरफ वर्क बढ़ते ही रहना चाहिए। ये जो जेंडर गैप कम करने की तरफ वर्क है, वो चलता रहना चाहिए। दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। सो हाउ टू रीड इफेक्टिवली? आदित्य, व्हाट is wrong with you? Why are you repeating the same question again and again? I will read it, have some patience. I don't like this. Someone else, can you send a message? How to read effectively? Just read, sit and read. Pick up a pointer and read. Aman, Aditya, sorry, Aditya. हमेशा एक पॉइंटर हाथ में रखना, एंड मेक श्योर दैट यू आर जस्ट रीडिंग, यू आर नॉट मेकिंग नोट्स व्हाइल रीडिंग। दैट्स द वे। या, नो नॉट यू आदित्य, नॉट
Not Aditya Vadiraj, okay? Not Aditya Vadiraj. I know. It's a different Aditya. All right. So, tone of the passage, everyone. Tone of the passage. धनंजय, पहली बात तो कॉन्शियस का मतलब अवेयर होता है, ओके? कॉन्शियस का मतलब अवेयर, ओके? सो द ऑथर इज अवेयर, कॉन्शियस, ओके? कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियंस का मतलब वो जो हमारे दिमाग में बेसिकली सही और मोरालिटी, ओके? कॉन्शियंस इज योर मोरालिटी, जो सही और गलत में फर्क बताता है आपको, दैट इज योर कॉन्शियंस, ओके? सो एम्बिवलेंट, caustic, no, not caustic. The author is talking about कहाँ कहाँ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, ओके? सो द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कहाँ कहाँ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, ओके? और ये प्रोग्रेस चलते रहना चाहिए, ओके? चलते रहना चाहिए। द ऑथर इज सेइंग दैट दिस शुड गो ऑन, लेकिन यहाँ यहाँ पर काम करने की भी जरूरत है, ओके? सो द ऑथर इज, Srinanga says biased. नॉट क्रिटिकल, नन ऑफ द नेगेटिव टोन्स विल बी देयर। नेगेटिव नहीं है ऑथर का। ऑथर क्या बोल रहा है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए, ओके? जैसा चल रहा है काम वैसे कंटिन्यू होना चाहिए। तो डेफिनेटली द ऑथर इज नॉट पॉइंटिंग एट द फ्लॉज, ओके? द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे ये इम्प्रूवमेंट्स और हो सकती हैं। सो द ऑथर इज ऑप्टिमिस्टिक, ओके? ऑप्टिमिस्टिक है, असर्टिव है। This is a problem solution kind of a passage, ठीक है? The author is talking about the problem and then giving the solution कि क्या करना चाहिए इस बारे में, ठीक है? Assertive है, optimistic है, then didactic है। Yes, analytical भी बोल सकते हैं। Yes, we can call it analytical as well। Analytical will also be a correct tone, okay? How to remember what we read? ओके, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर व्हाट यू रीड, आदित्य। आप जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, ओके? तो बेसिकली द वंस दैट आर इन डार्क, इस पूरे हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है कि आपको बताएं कि डिफरेंस कैसे, कहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर आपको कम ध्यान देना है। दिस इज व्हाट द हाईलाइटर्स आर फॉर, ओके? कि कहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पे स्किम करना है, ठीक है? सो व्हेन यू आर रीडिंग ऑल दैट, आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे जब आप बहुत ज्यादा रीडिंग करोगे तब, ओके? सो मेक श्योर टिल दैट हैपेंस आप बस रीडिंग कर रहे हो, ओके? समझ में आने लगेगा बाद में। जैसे आप बचपन में स्टोरीज सुनते थे, ये सब मॉरल वैल्यू वाले स्टोरीज सुनते थे, तो आपको समझ में आता था क्या कि क्या है स्टोरी, डज इट मेक सेंस? नो, बट व्हेन यू ग्रू अप यू रियलाइज दो स्टोरीज का सेंस क्या था, मॉरल वैल्यू लेसन क्या था, एग्जैक्टली व्हाई वर वी लिसनिंग टू दो स्टोरीज। सो इन द सेम वे कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली आएगा इफ यू रीड अ लॉट, ओके? सस्ता मजबूत सस्ता सुंदर मजबूत एनालिटिकल। त्रिरंगा, नो। व्हाई डिड आई टेल यू एनालिटिकल है कि क्योंकि ऑथर इसका सारे पहलू को देख रहे हैं, ओके? ऑल द ऑथर इज टेकिंग ऑल द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ दिस राइज, ओके? कि कहाँ कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ठीक है, ओके? फेड वेल, कहाँ कहाँ पे फेड वेल, एंड कहाँ कहाँ पे देर इज नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, ओके? So that's why we are calling it analytical, because the author is not just looking at the faults, not just looking at the good side, doing both at once, okay? Ma'am, because of some important work, I didn't attend the RC class, but I watched its recording, ma'am. Good job, Aditya. Yeah, but how much did you score?
Yes, thank you everyone. I hope to see you at 6, everyone. Hope to see you at 6 for the quiz that we are going to have at 6. Editorial quiz. All right. इवन पढ़ लेना, लेकिन घूमने जा रहे हो बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बट पढ़ लेना फिर